एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है. But do you know Japanese Nikkei was 40,000 in 1989 but today it's below 32,000? इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से ग्लोबल इंडिसेस हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर हैं. जैसे कि चाइनीज मार्केट डाउन 50% सिंस 2007, इटालियन मार्केट डाउन 42% सिंस 2000, पोर्टुगल मार्केट डाउन 59% सिंस 2000, या इवन सऊदी अरेबिया मार्केट डाउन 46% सिंस 2006. तो क्या है इनकी कहानी? क्या सही में स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में जीरो या नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती है? क्या इंडिया में कभी ऐसा हो सकता है? Let's analyze by starting with the Japanese market. हमको जाना पड़ेगा back to the late 70s and 1980s. Investors US market से काफी परेशान हैं, जो वियतनाम वॉर, ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की वजह से स्ट्रगल कर रही हैं. वहीं जापान इज इन द मिडल ऑफ अ सपोज्ड इकोनॉमिक मिरेकल which started after the World War II. In 10 years, its GDP has tripled from 1 trillion in 1978 to 3 trillion in 1988. That means an average GDP growth of 11.8% every year. Obviously, the rising GDP means the stock market is also very buoyant. 1978 में जापानीज निकेई 5,000 पर ट्रेड कर रहा है, बट 1989 आते आते इट हैज रिजन टू अ हाई ऑफ नियरली 39,000. तो क्या रीजन है इस राइज का? नंबर 1, earnings. The earnings per share of Nikkei companies stood at 238 at the end of 1978. At the end of 1989, this had risen to 722. But something else is happening over here. Just like the GDP, the earnings have also gone up 3 times in 10 years. But the market is up 8 times. Where is this additional stock market growth coming from? Whenever any country's economy is growing very fast, investors want to buy its share at any price. This can be seen from the PE multiple that they had started giving to the Nikkei, which rose from 21 in 1978 to 54 in 1989. One reason is that they expect that this hypergrowth will continue in the future. Basically, investors assume कर रहे थे कि 1989 से 1999 के बीच भी earnings double या triple हो जाएंगी. अगर earnings फिर से ट्रिपल हो जाते, if EPS grew to 2,200 by 1999, the market could have still grown from 40,000 to 80,000 if the investors valued Nikkei at a much more moderate PE ratio of 38. Sadly, investors, even the most seasoned ones, sometimes fail to take notes of SEBI's standard warning that past performance is no indicator of future results. वही हुआ जापान के साथ. 1990 और 1995 के बीच में जापानीज इकोनॉमी ने ग्रोथ तो दिखाई, बट उसके बाद इट एंटर्ड अ डेकेड्स लॉन्ग पीरियड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ. In fact, the Japanese economy is still smaller today than what it used to be in 1995. Investors realized what was going to happen and they started leaving the market in droves. In 10 years, the market fell from 40,000 to 20,000. Now let's just think this through and take the facts into consideration. Investors thought company earnings will probably triple between 1990 and 2000. Actually, it went up 722 to just 800. By now, investors had already punished the market for its slow growth and realized their previous mistake of paying premium valuations. The market crashed and PE ratio fell to a much more reasonable 25. वीडियो के स्टार्ट में मैंने कई कंट्रीज के नाम बताए जिसके स्टॉक इंडेक्सेस 10 या 20 सालों में भी ग्रोथ नहीं दिखा पाए. हर ऐसे मार्केट की कहानी में 3 कॉमन फैक्टर्स रहते हैं. नंबर 1, जब वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचते थे तो उनकी इकोनॉमी स्टोरी को लेके ऑप्टिमिज्म हुआ करता था. नंबर 2, चांसेस आर कि ऑल टाइम हाई पहुंचने से पहले मार्केट ने बहुत कम पीरियड में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, मतलब the market had reached premium valuations. Number 3, and the chances are something changed, meaning the economy optimism vanished and investors punished the market by deserting it over the long term.
अब आते हैं इंडिया पे। क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन मार्केट कुड गिव जीरो रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 10, 20 और 30 इयर्स? अगर हम अपनी चेकलिस्ट देखें तो फैक्टर 1 इज मेट बट फैक्टर 2 इज नॉट। हमारी मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया है, पर इतना नहीं कि हमारी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हों। निफ्टी PE रेशियो इज स्टिल एट 21. As a third factor, there is a still very high optimism over the prospects of the Indian economy, and hopefully it will pan out as per expectations. The good news is, because the valuation is reasonable, the market can even handle some disappointments. All this means that the Indian market is unlikely to be in a Japan-like situation. हाँ, अगर निफ्टी कुछ ही सालों में 20,000 से 50,000 हो जाए तो you will know that there is a very little room for disappointment. And if the earnings do not come through, we could also see something like a lost decade for the market. If this video helped you increase your financial knowledge, do subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.